broken. Are you consenting? Aww. Hi you guys, welcome to a new vlog. I was just sitting to get ready and I thought कि आज मैं vlog कर लेती हूँ. Now I literally have like 7 to 10 minutes to get ready. My outfit, makeup, everything. अगर मैं अभी जल्दी तैयार होके नीचे नहीं गई ना, मम्मी is going to come kill me. I need to tie my hair. It's too hot. So this is what the makeup looks like. बहुत basic है. Concealer, little bit of blush, same वही cheek tint, lip tint में भी, eyebrows, white kajal, mascara, and that's it. Now let's go and choose an outfit for today. What should I wear? Should I go for a dress? Nah, I'm not in a dress mood. Should I wear this top that I got from Janpath? आज इसको style करती हूँ मैं. Now bottom wear के लिए what should I wear? Should I do a monochrome with this one? Oh, I can do this. So this top with these pants, green and monochrome se vibe. I think it will go well together. So let's just put this on. And then this is today's outfit. मैंने glasses पहन ली है. Then I'm wearing this top that I got from Janpath recently. And sorry यार इसका कोई link नहीं मेरे पास. These sage green pants जो कि H&M के हैं. And white shoes. Okay, so how should I accessorize this look? What? First of all, necessity and मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं पक्का नीचे जाके डांट खाने वाली हूँ. I'm thinking earrings पहन लेती हूँ उसके साथ. Okay, so do you remember मैं Miniso से recently earrings लेके आई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, definitely check it out. I'll link it here. But I got a pair of like very nice earrings from Miniso. Very like perfect for everyday basis. थोड़ा सा dress up करने का outfit वाली earrings. What is the description? But you know what I mean. Hi mummy. Say hi to my vlog. मैंने पहले बना रखा है ये दही बड़ा. Thank God मुझे इतनी भूख लगी. वाह, आप तैयार हो गए? तो मैं पहले हो गई, तैयार होके आ गई. देखा, मुझसे इन्होंने बोला था कि फटाफट 10 मिनट में नहीं आएगी तो देखना. तो मैं फटाफट से दही बड़ा खाती हूँ. मुझे तो फोन चार्ज लगाना है क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है. लेट्स डू दैट. ऑल्सो गाइज कैन यू सी मेरा सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है, लैपटॉप एंड एवरीथिंग. मैं ना पिछले 3-4 दिन से आई एम स्टेइंग इन दिस रूम ओनली. मैं यहीं पे सो रही हूँ. मतलब आई वर्क थोड़ा बहुत यहाँ शूट वगैरह तो ऊपर ही करती हूँ, बट आई हैव बीन स्लीपिंग डाउनस्टेयर्स. तो मेरा सामान सारा नीचे है. एंड फोन को लगाते हैं चार्ज पे. ऑल्सो इट्स माई बर्थडे सून एंड बर्थडे गिफ्ट्स हैव स्टार्टेड अराइविंग. पापा आपने भी आज ऑल ब्लू, मैंने ऑल ग्रीन आउटफिट पहना है. हम दोनों मोनोक्रोम रॉक कर रहे हैं. चलो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ फटाफट. डिटेल्स दो अपने आउटफिट की. ये मैंने पिछले साल मंगाया था मिंत्रा से. ठीक है. इसकी लेगिंग बहुत बेकार थी. और ये लगे हमारे सनग्लासेस और ये लगा मेरा परफ्यूम. I got this perfume for my mother for Mother's Day from Zara. इसका ये अल्ट्रा जूसी वाला जो Zara का है, this is very nice. मैं आपको इस लाइटिंग में भी अपना आउटफिट दिखाती हूँ. So cute. Let's go. बहुत तेज धूप है. Friends, it's very hot. So I'm not driving today because मुझे ना अभी एक shorts edit करना है. I was supposed to upload it at 11 and it's 11:07 already. और मुझे इसका edit भी finish करना है. तो मैं फटाफट से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने तक ये काम कर लेती हूँ. So this is the most chaotic vlog ever, but I hope you're enjoying it and I edit the shorts now. मम्मी शायद अपना फ़ोन घर पे भूल गई है, तो she is going to like get it back. सही, मुझे और टाइम मिल जाएगा शॉर्ट्स एडिट करने का. I edit my shots. Wait, let me show you. In this app, in short. इस पे edit करूँगी मैं. Guys, it's 11:11. Makeup है. I'm not even sure if you can hear me properly. But मैं ना आधे रास्ते पे थी और मुझे अपर्णा और समृद्धि का कॉल आया कि they are waiting for me at my house and they have a very cute surprise with them. So I just took a rickshaw आधे रास्ते से and I'm going back home now. It's like this is the most chaotic day ever and I'm not even sure if you can hear me, but I'm going back home now. I am here. Are you going to record me while I'm vlogging you? Oh my God, show me the cutest surprise. Oh
Okay guys, you must be wondering क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. So basically समृद्धि just adopted a new dog and मुझे बहुत टाइम से मन था उससे मिलने का. You know I love dogs, like oh my god, dogs are the best. And मैंने आज प्लान किया था कि मैं शाम को उसके बाद जाऊँगी डॉग से मिलने के लिए. And she brought him here. And now let me make you officially meet Ruposh. And Ruposh is a Pahari name. Hi! Oh my god, he's so cute! Guys, he's the cute. Oh, कितना छोटू है. Like just see. This is my hand against him. Wait, I'll show you against my slipper. Like this is my slipper against him. Just see, ये कितना छोटू से. 2 hours later. Hi guys, so हम लोग इतनी से पता है गॉसिप करने में लगे, बस बैठ के रूपोश के साथ खेल रहे हैं और वो सो गया. तो अभी वो थोड़े सोया हुआ है. एंड आई थॉट कि मैं सबके लिए आइस टी बनाती हूँ. सो आई एम मेकिंग सम आइस टी जो कि बहुत ही ईजी है. आई गेट दिस नेस्टी का आइस टी एंड यू जस्ट टेक द पाउडर. 2-3 चम्मच पाउडर डालो, आइस डालो, पानी डालो एंड दैट्स इट. Is this your first iced tea? Then No, it's not my first ice cream. नहीं नेस्टी वाली. हाँ नेस्टी वाली. मैंने ना पढ़ना को परसों बताया like get this, it's really good and she's already bought it. I like such friends. Damn, it's good, bro. है ना? It's really good. यार look at the cute. कौन है? रूपोश कौन है ये? कौन है ये? Oh. He's so cute. Oh my god. इसलिए वो करूँगी. शिवन्या है. ये गिर जाएगा भाई. Sir is tired now. Sir will take another nap to recharge. Guys, food is here. We ordered some food. And बहुत भूख लग रही है अब. कितना प्यारा फ्लावर्स लाए हो आप लोग. वाह. Cheers. Walk into the place, dispatch you from a race. My heart, it started racing. Later. I want to show you something because I'm so excited. This is like such a special day in so many ways. And one of the reasons is because I got my first PR package. So if you don't know, brands sometimes like gift you PR. So basically they send you some of their things from maybe their latest collection or anything. And today I got my first PR package ever. And I thought कि ये तो like this is such a achievement, a milestone, a monumental moment. तो ये तो vlog करना बनता है. और ये पता 3-4 दिन पहले आ गया था, पर मैंने सोचा था कि मैं vlog में ही अपना फर्स्ट PR अनबॉक्स करूँगी. तो मैं इतने दिन से इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कब vlog करूँ और इसको अनबॉक्स करूँ. So let's just open this. So excited. Da da da. So here it is, and this is like so exciting. It's like opening a birthday gift or something, and I'm so grateful for this. So first of all, they've sent me their mascara. मैंने कुछ भी use नहीं करा है, जो कि मैंने अभी just खोल रही हूँ, तो मैं कुछ reviews वगैरह दूँगी. And just showing you the products that they sent me. Ooh, shiny. I see something shiny. They have really pretty packaging, यार. तो ये पैकेजिंग कितनी प्रिटी है. लुक एट दिस गाइस. द सेकंड वन इज देयर काजल, मार्च का काजल. सब वजह से अप्लाइंग इट और ये टूट गया. मैं थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दिया क्या. इसका ये अच्छा हो रहा था यार, लाइक ये लग अच्छा रहा था यूज़ करने में. It's gliding very easily, but it टूट गया. That is sad. Next I got, यार इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है यार. ये कितनी क्यूट सा इसमें यहाँ पे आई में रोज गोल्ड कलर का है. तो ये एक लाइनर है. But I needed a new liner. So this is their liquid eyeliner in matte black. Now let's just, ooh, it's gliding so nicely. इसकी टिप बहुत अच्छी है यार. This is the concealer. It comes in like that tube वाला packaging. And this one is in the shade pure beige. I think ये मेरे को dark होगा. Yeah, this is like a darker shade for me.
This is a lipstick. It's their Mars Matinee lipstick. ये बहुत dark brown shade है, like very chocolatey shade, and I don't have anything in this shade. Oh, it's gliding so smoothly. Can you see? अरे शेड कितना बॉम लग रहा है. नेक्स्ट आई हैव गॉट एन आई शेडो पैलेट और इसमें 16 आई शेडोज आई गेस, एंड काफ़ी पिंकिश और ब्राउन टोन है, लेकिन ग्रीन भी और ब्लैक भी, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के टोन्स हैं एक्चुअली. वॉच करके देखें. इट्स नाइस, इट्स लाइक वेरी नाइसली पिगमेंटेड. मैंने इसका ये ब्राउन वाला शेड स्वॉच करा. लेट मी ट्राई द पिंक वन एज वेल. इसको ट्राई करते हैं. चलो. Did you see that pigmentation? The payoff. I'm not giving you the finger. I'm so sorry. But ये इसका कलर है. मैंने ये वाला ट्राई किया था. काफ़ी पिगमेंटेड लग रही है. Although इस टाइप के कलर मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, like very like bright pink or anything. But I think कभी कभार के लिए तो सही रहता है. Next I've got this highlighter. This is such a different highlighter. बहुत कॉपरी सा शेड है इसका. I've never had any highlighter in this shade. यार कुछ भी बोलो, पिगमेंटेशन बहुत सही है इन प्रोडक्ट्स का. नाउ लास्टली द फाइनल प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ 3 लिपस्टिक्स एंड ये है पीचेस एंड न्यूड्स वेरिएंट में. ओके, सैडली आई थिंक प्रोडक्ट भेजने में इन्होंने जो अपनी लिपस्टिक भेजी है ये टूटी हुई है. शिट यार, दिस इज सो सैड. इट्स ब्रोकन. दिस वन इज इन द शेड इंस्टेंट फ्लश. थैंक गॉड ये सही है. तो लगा के देखूं. This smells like coffee. So yeah, that's it for this PR unboxing session. I was so excited ना कि मेरा first PR है. देख लो मेरे हाथ की हालत अब. This just felt like such a good experience. For the first time I got PR and it feels like people out there are watching my work and my work is getting acknowledged. So like I'm so grateful for this. My battery is flashing, so I'll do this outro quickly, but I'm so grateful for you. Have an amazing day or night whenever you're watching this video. I love you. Thank you for being here. Thank you for being the most motivating, uplifting community, and I just love you all so much. I'm obviously a little extra emo and extra mushy today because I'm on my periods, but I just want to tell you, I want you to remember that you are the best and I love you. Bye. Okay, what the fuck? Outro अभी just किया ना, realize कि मैंने यहाँ पे lipstick stain लगा लिया. Shit, what have I done? I need to clean this quickly. Obviously, we needed to have a chaotic ending to this vlog. सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो जाता? मैं थोड़ा सा Lysol लेके इसको फटाफट से साफ करती हूँ because shit, ये पूरा pink हो गया यहाँ पे. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, baby, the Taj Mahal. Ayy, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.